Thank you, sir. I, Sukanya Tikadar from the Department of English, Kirori Mal College, will be your host for the evening. Before we move on, I will request our honorable guests to please come forward for lighting of the lamp ceremony, which will be accompanied by the Saraswati Vandana. The ceremony will be followed by the full gate of the university as a mark of respect. सब ब्लर है सब ब्लर है ब्लर आ रहा है सब क्लियर है 6 मिनट नहीं है I will request the full gate of the university to be played, please.
सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन आधुनिक स्वेच्छा पुरातन ज्ञान धाराओं का संगम देश की स्वाधीनता हित भूमिका शतकोटि वंदन निष्ठा धृति सत्यम के मंगल दिव्य भावों का समागम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे छात्र और छात्राएं दीजिए सदचरित्राचार पावन साधना संकल्प संयम नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम. Thank you everyone. I will request everyone to be seated please. Welcome to Aikyam 2.2, which is the valedictory session of the Aikyam G20 event conducted in the month of May this year to celebrate India's presidency at the G20 World Forum. This is a two-day event which is being conducted under the aegis of the Culture Council of the University of Delhi. Day 1 aims at celebrating the rich cultural diversity of the G20 host country India, along with that of G20 member country Australia. For Day 2, there will be a special talk themed on G20 and the idea of Vasudhaiva Kutumbakam, that is one earth, one family. Indeed, our nation has always conducted itself in accordance with this ancient outlook towards the world. The name Aikyam means oneness, thus manifesting the idea that India's progress is symbolic of the world's progress. This event is organized with an objective of creating awareness about India's presidency at the G20 World Forum and how India has emerged as a role model for the globe. The youth of India plays a crucial part in this journey of progress and leadership since they constitute two-thirds of the population of the nation, giving it a vibrancy which is lacking in any other nation. The year 2023 has been made especially more special for India as a global leader, for besides the prestigious G20 presidency, India is also proud that the year 2023 has been declared by the UN as the year of millets, owing to the relentless initiative of India at the global forum. We are honored today to have very esteemed guests amongst us this evening as we sojourn through this rich and vibrant cultural exuberance of India and Australia. I will request Principal Sir to please felicitate our chief guest for the event, Professor I.M. Kapahi, with a shawl and memento. Professor Kapahi is a member of the Executive Council, University of Delhi, and of course he has superannuated as a faculty member from Kirori Mal College after a long and successful teaching career of 40 years in the institution. I will now request Principal Sir to please felicitate our guest of honor for the evening, Shri Anup Latharji, with a shawl and memento. Shri Lathar is the chairperson of the Culture Council of University of Delhi
Thank you, sir, for gracing this evening. I will now request Principal Sir to felicitate our guest of honor for the evening, Professor Ravinder Kumar, with a shawl and memento. Professor Kumar is the Dean of the Culture Council of University of Delhi. Pleasure having you with us this evening, sir. I will next request Principal Sir to please felicitate Shri Chandra Vadvaji with a planter. Shri Vadva is the chairperson of the governing body of Kirori Mal College. Sir, as always, it is a pleasure having you with us. Next, I will request Principal Sir to felicitate Professor Anil Aneja with a planter. Professor Aneja is the head of the Department of English, University of Delhi. Thank you, sir, for being our partner for this event. It is a matter of great pleasure for us that we are also joined off stage by some special dignitaries. I will request Principal Sir to please felicitate Professor Pankaj Arora with a memento and planter. Professor Arora is the Dean of Students' Welfare, University of Delhi. I will now request our principal, Professor Dinesh Khattar, to please come to the podium and present his welcome address. सभी को नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग और किरोड़ी मल कॉलेज के साझे प्रयास से आयोजित G20 के 2 दिवसीय कार्यक्रम एक्यम 2 के इनॉग्रल सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित श्री प्रोफेसर इंद्र मोहन कपाही जी, चांसलर्स नॉमिनी इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्री अनूप लाठर जी, चेयरपर्सन कल्चर काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर रविंद्र कुमार, डीन कल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, श्री चंद्र वाधवा जी, चेयरमैन गवर्निंग बॉडी किरोड़ी मल कॉलेज, प्रोफेसर अनिल अनेजा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, सिटिंग इन फ्रंट प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, प्रोफेसर चंद्रशेखर, प्रोफेसर राजेश सिंह, members of the college governing body, Professor Gunjan Gupta, Professor Rajesh, joint deans, joint proctors, deputy deans, deputy proctors,
my dear colleagues and students, I'm sorry I must have missed some esteemed guests. आप सभी की गरिमामय उपस्थिति से आज किरोड़ी मल कॉलेज का प्रांगण आलोकित एवं उत्प्रेरित है। आप सभी का हृदय की अतल गहराई से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। G20 के इस कार्यक्रम में जिस तरह से स्टूडेंट्स, टीचर और ढेर सारे अतिथियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, उससे मेरा हृदय अत्यंत ही गदगद हो गया और एक संतोष के भाव के साथ आज मैं ये कह सकता हूं कि G20 की जिस मुहिम को लेकर हमारा देश पूरे विश्व का मार्गदर्शन एवं प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह सही दिशा में अग्रसर है और उसे ठीक ठीक फलीभूत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। G20 के इस महत्वपूर्ण प्रयास से हमारे देश भारत का मौलिक सपना, जिसमें सभी का कल्याण निहित है, पूरा होगा। किरोड़ी मल कॉलेज में 10 मई को आयोजित G20 के 2 दिवसीय समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच को सुशोभित करने वाले हमारे श्रेष्ठ वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने अनेकों महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर इशारा किया, जिनको आत्मसात करने पर G20 के मिशन को निश्चित रूप से अंजाम दिया जा सकेगा। उनके वक्तव्य से यह पूरी तरह परिलक्षित हो रहा था कि शिक्षण संस्थानों को आगे बढ़कर न सिर्फ भिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, बल्कि उनके निष्कर्षों को सरकार के साथ साझा भी करना चाहिए, ताकि एक सार्वजनिक मंथन के उपरांत उस अमृत को पैदा किया जा सके जिसका इंतजार हर युग अपने अपने काल में करता है। मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुनील अम्बेकर जी ने G20 मिशन के अनेक पहलुओं पर चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रहे इस यज्ञ के महत्व को विस्तार से रेखांकित किया। उन्होंने हमारे कॉलेज में हो रहे इस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की और बताया कि कैसे G20 की वैश्विक यात्रा में हम अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। For India, the G20 presidency marks the beginning of Amrit Kal towards a futuristic, prosperous, inclusive and developed society, distinguished by a human-centric approach at its core. India, under the able leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, was successfully able to achieve consensus around the New Delhi Declaration. The timing of the G20 summit was also opportune, following India's successful moon landing under the Chandrayaan-3 program. जिन विचारों का उद्बोधन और प्रतिपादन G20 के इस समिट में किया गया, उसका प्रभाव आने वाले कल में 100% जारी रहेगा और उसी प्रभाव में कभी ना समाप्त होने वाली चुंबकीय धारा निरंतर चलती रहेगी। उसी धारा को हम सभी को मिलकर और गति देना है और स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रकार कहा था, उसे उस प्रकार तब तक लेकर आगे बढ़ना है जब तक कि वह अपनी मंजिल को प्राप्त न कर ले और जो सपना भारत सदा से देखता आ रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, को यथार्थ रूप दे सके। अंत में इस कार्यक्रम को प्लान करने से लेकर सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करने तक जिस तरह से कॉलेज के टीचर्स, स्पेशली प्रोफेसर संगीता गदरे, डॉक्टर सुकन्या, डॉक्टर शालिनी बख्शी, डॉक्टर गौरव प्रभार, डॉक्टर रजनी गुप्ता, डॉक्टर दीना and so many teachers, very difficult to take all the names, staff और स्टूडेंट्स ने अपनी भूमिका अदा की है, वह अतुलनीय है। वह सभी बधाई के पात्र हैं। मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में कारगर एवं वंदनीय वक्तव्यों का उद्बोधन आज के अतिथियों द्वारा दिया जाएगा। इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद। आपका इतनी शिद्दत और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होना बताता है कि जिस तस्वीर को बदलने के लिए आज हमारा देश उठ खड़ा हुआ है, वह तो बदल कर रहेगी। ईश्वर करे आप सभी अपने अपने स्तर, अपनी अपनी क्षमता के साथ देश के लिए अपना कर्तव्य निभाते रहें और इसको लेकर अपने आसपास के लोगों को निरंतर प्रेरित भी करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में चंद पंक्तियां आपके लिए। क्या है कि हस्ती आज भी कायम है,
क्या है कि जमाना भारत की ओर देख रहा, क्या है कि दुनिया आज त्रस्त हो गई है, क्या है कि जमाना रुख अब मोड़ रहा। समय बदल रहा है, पुराना वापस आ रहा है, चलो अब गीत गाते हैं, जब भारत भारत हर कोई गा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for that engaging talk. It is a matter of great pride that the Fine Arts and Photography Society of our college has very talented students who work tirelessly to display their artistic and cultural flair. On this special evening of cultural repertoire, it is my pleasure to introduce the finest of the artwork by our fine arts students, which they want to present to our beloved principal, Professor Dinesh Khattar. I will request the convener of FATS, Dr. Sagarika, to please be present on stage and do the same on behalf of the Fine Arts Society. There are a total of 4 artifacts, 3 sculptures and 1 painting. The sculptures have been prepared by our student Saurav Raj and the painting by our student Manya Agarwal. The first sculpture is titled Saraswati Mata. It is being presented as a homage to the institute since it is a temple of learning for the students. Next we have Blossom of Innocence. Right now we have the grooming girl, which is being presented. It depicts a girl grooming herself merely with a beaming smile. Next we have the sculpture titled Introspection. This sculpture shows the eternal journey of man in quest for never-ending existential questions, which are an integral part of a man's self-introspection. Next we have Blossom of Innocence. The girl child represents purity, whereas numerous delicate flowers unfurling from her hair symbolizes the bloom of youth. Up next, we have a painting made by a student Manya Agarwal. It is titled B.R. Ambedkar, the portrait of an Indian social reformer. Thank you, Sagrika and Team FATS for the wonderful artifacts. Next, I will request Sri Vadhava ji, Chairperson of the governing body Kirori Mal College, and also the patron of the event, to say a few words. Dignitaries on the dais and off the dais, faculty members and students. This is for the first time what India has achieved. The world could not expect that India will do that much that better than what was not thought of. Total consensus among the member countries in declaration of summit. That was the no full stop, no footnote, no caveat. That kind of achievement was there. We are the leaders in the digital
transactions. 114 billion transactions are taken. We are the experts. We wanted that this platform infrastructure should be given to the world, this technology, and that has been accepted by the world. So that has become the part of G20. Then agreed to reform multilateral development bank, because India had raised this issue at the different platforms in the past, and it was agreed in G20 that there must be some reforms in the IMF, World Bank, etc. That has been accepted. Indian Middle East Europe Economic Corridor. That is the route which will start from the India, Middle East, then it will touch the Europe. Of course, to compete with China, the world wanted this kind of what the Belt Road scheme was given by the China. The world should also give something. Keeping in mind climate change, and it, because once the climate change is coming, number of new steps were required to be taken by the different countries, whether it's renewable energy, whether it's electric vehicle, etc. Each and every country was the need of finance. So through this mechanism, through G20, this was accepted that they will be given finances also. The best part of this declaration was the permanent membership to the African Union. Of course, this will amplify the voice of poor countries, and which was accepted by each member country. That was the best part. Then managing global debt vulnerability, because of the corona, because of the Chinese policy, they give the loan at the higher rate of interest, etc. Whether the project is viable or not. Lot of African countries, including this side of the Asia, Pakistan, Sri Lanka, all are under the burden of debt. So how to manage this? This was also considered. And to follow up, this will continue. It was ensured because India will be a part of the next G20 summit also as a presidency. Each country will be having the opportunity to become the part of the previous presidency is own, and later on also. So they will be actively participating in the Brazil under the chairmanship of the Brazil. So they will be quite active. Beside that, see, once Mr. Amitabh Kant, Sherpa of the G20, he invited him in one of the program. The proposal was given that there is one basic issue for this issue is coming, which is creating a lot of problem for the world. That is the joint family system. He appreciated, but he said because of the shortage of the time, work has not been done. At this juncture, it may not be possible to take up this concept, but he appreciated. So joint family is also very because the way the society is working, the way the families are being broken, the joint family, you will be surprised to know that USA gives the tax incentive for keeping only the husband, wife, and their children. To that extent, they have given the definition of joint family. So tax incentive you can get even if your children are staying with you. So these kind of things have been given to us.
by the G20, and what was said at the very beginning, that one earth, one nation. So I hope that with this kind of awareness, what we are propagating in India, 1 crore 75 lakh people have been covered for giving to understand this, get this message that G20 is going on in this country, and this has covered all kind of society, whether women, young generation, even the artists, etc. All kind of people were covered in this G20 program. Thank you very much for inviting me. Thank you. Thank you for your insightful words, Barbara sir. I will now request Head of the Department of English, Professor Anil Aneja, our patron for the event, to share a few words with the audience. Honorable respected chief guest for this evening's event, Professor Kapahi, who needs no introduction. Guest of honor, respected Dr. Anup Lathar, the chairman of Culture Council, University of Delhi. My dear friend and colleague, Professor Ravindra Kumar, the Dean Culture Council. Most respected Professor Wadhwa, Dr. Wadhwa, the chairman of the college, Professor Khattar, the principal of the college, dignitaries on the dais, friends and dignitaries of the dais, faculty members and students of Kirori Mal College, my colleagues from the Department of English and students of Department of English, University of Delhi, ladies and gentlemen. I hope I have not left out anyone. Forgiveness in case there are any omissions in this respect. The list is too long for friends and colleagues to acknowledge. We have Professor Pankaj Arora, Professor Chandrasekhar, Dr. Rajesh, University Librarian, Professor Sanjay Roy, so many, Professor Gundan Gupta. I could go on. There are so many friends in the audience and on the dais that the list is too long. A warm welcome and welcome to everyone on this occasion, on this evening, when we have the opportunity as Department of English to be a part of this event. I'm grateful to the Kirori Mal College for giving us this opportunity to share platform on this very important theme, the G20, and in respect of the member country Australia, which is the theme for this evening's program, and the G20 as far as Kirori Mal College is concerned. It's coincidental that as we celebrate the G20 coordinations between India and Australia, Australia is playing its semi-final in Calcutta against South Africa, and many say that India and Australia will also play the finals. We don't know that as yet, perhaps. I'm not from the school anyway. But it is not just a love of cricket that both countries share. It is respect for democracy and multiculturalism that both India and Australia have in common, and that respect for democracy and multiculturalism that we celebrate as we commemorate the G20 event at this college and on this platform this evening. India and Australia have a long relationship despite the fact that they are literally miles apart in terms of physical distance. Our history and relationship go back from the colonial period, and there has been no looking back as far as coming closer is concerned, despite the geographical distances. It is, in a way, I would say today's program is one more attempt to bridge gaps between various continents. Indian writers, right from Rabindranath Tagore to Arundhati Roy, are widely well read in Australia, and writers such as Tim Winton and Kate Gradwin are Australian writers such as Tim Winton and Kate Gradwin are well celebrated in India,
celebrating or pointing out, highlighting the culture, history, and traditions of both the countries. The Australian literature is taught in many universities of the country, and a number of our students are continuing research and publications as far as that domain is concerned. Indian music and art are well celebrated in Australia through events such as the Confluence Festival, and Australian culture and food are a part of Indian way of life in many parts of the country. The point I'm trying to make is that this coming together on this platform of the two countries through the event organized by Kirori Mal College in collaboration with our department is no coincidence. It is a part of a continuing relationship that both countries have enjoyed and to which this present event will contribute significantly. The closeness and proximity between India and Australia was visible even at the recently concluded G20 summit, where apart from economic agreements, there were wide discussions and agreements on in areas such as climate change, sustainable development, and technology. Discussions were held on students' exchanges, education, and cultural give and take. I hope the event organized this evening will not just be one of its affairs, but the college will carry forward the engagement with Australia in multiple ways by trying to foster memorandums of understanding with various Australian universities and colleges, inviting Australian faculty and students to the university and to the college, and also encouraging work on the part of students as a part of the BA UGCF dissertations which will come in the fourth year and beyond in Australian literature. We as the Department of English will be very happy to collaborate in any of these and any other engagements which the Kirori Mal College may undertake with respect to India-Australia fostering of friendship, where our role could be crucial. I once again thank the college, its chairman, the principal, for giving us this opportunity to be a part of this very valuable event, and hope that this relationship that the Kirori Mal College has reached out to the department for fostering will continue in many other events. Thank you very much. Thank you, sir, for your rich, educating, and assuring words. Our guest of honor for the evening, Professor Ravindra Kumar, is a versatile personality. Besides being the Dean of the Culture Council of University of Delhi and being conferred upon the honor of Bharatiya Bhasa Sevi Samman, he is also the chairperson of Aditi Mahavidyalaya governing body. Professor Kumar is also presently the head of the Department of Punjabi, University of Delhi, and sir is also a prolific writer. Sir, may I please request you to come to the podium and share a few words. शुक्रिया जी, बहुत ही आदरणीय श्री अनूप लाठर जी, चेयरपर्सन स्टीयरिंग कमेटी कल्चर काउंसिल, प्रोफेसर इंद्र मोहन कपाही जी, सिर्फ नाम ही काफी है, प्रिंसिपल दिनेश खट्टर जी, कॉलेज के चेयरपर्सन श्री चंद्र वधवा जी, प्रोफेसर अनिल कनेजा जी, प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर अरजीत सिंह यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, प्रोफेसर संजय सिंह जी, प्रोफेसर राजेश कुमार और सभी कोलीग्स, फैकल्टी मेंबर्स और डियर स्टूडेंट्स, बात G20 की होनी है, बात ऑस्ट्रेलिया की होनी है, बात भारत की होनी है,
मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं प्राइम मिनिस्टर से शुरू करूं कि आपके प्रिंसिपल से शुरू करूं। क्योंकि अगर देश का नेता ऐसा हो या संस्था का नेता ऐसा हो, संस्था का लीडर ऐसा हो, वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जैसा हो, कल्चर काउंसिल में श्री अनूप लाठर जैसा होता है तो सिस्टम के जो बाकी पुर्जे हैं ना वो अपने आप जैसे ग्रीस दिया हो ऐसे काम करना शुरू कर, और ये लोग सारे सबको काम पे लगा के बड़े ही विनम्र भाव से पीछे हो जाते हैं। किसी शायर ने कहा है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। जब G20 करने का ख्याल पहले प्राइम मिनिस्टर से आया होगा ऊपर की तरफ, उसके बाद प्रोफेसर योगेश सिंह, श्री अनूप लाठर जी, इनके पास आया, तब हमें कुछ नहीं पता था हमने क्या करना है। हमें तो ये पता था भी G20 का जो होस्ट है वो भारत कर रहा है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमने कुछ कॉलेजेस को, कुछ डिपार्टमेंट्स को चुनना है, और वहां अलग अलग जो देश हैं वो उनसे रिलेटेड प्रोग्राम कराने हैं। बाद में ये क्लैरिटी हुई कुछ एकेडमिक प्रोग्राम होंगे, कुछ कल्चरल प्रोग्राम होंगे, तो ये बाद में धीरे धीरे इसका जो स्वरूप है सामने आता है। पर आप हैरान हो गए, कॉलेजेस ने और डिपार्टमेंट्स ने और फैकल्टी ने और जो प्रिंसिपल्स ने और इवन स्टूडेंट्स ने जो अपनी योग्यता का परिचय दिया ना, उससे यह सिद्ध हो गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय का हर कॉलेज और हर डिपार्टमेंट, इसको कोई भी असाइनमेंट दे दी जाए, चाहे वो नेशनल लेवल की हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, इनमें करने की क्षमता है। ये अलग बात है कि भक्त हनुमान जी के हैं, इनको अपनी ताकत याद करवानी पड़ती है कि हम कितने ताकतवर हैं। सबसे पहले खट्टर साहब जो आपकी विनम्रता है, उसको मेरा आदाब, उसको मेरा सलाम। जितने विनम्र तरीके से आप ऊपर से नीचे तक सभी से बात करते हैं या काम करते हैं, वो विनम्रता ही इस देश को आगे ले जा सकती है। और डिप्लोमेसी में विनम्रता और जो वाणी होती है ना, सारा कमाल विनम्रता और वाणी का होता है। जो डिप्लोमेट जो आपस में जो बैठते हैं देशों के संबंध में बात करने के लिए, तो वो कितने विनम्र हैं, किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे को क्या ऑफर देते हैं, किस भाव से ऑफर देते हैं। बहुत सारे युद्ध इसी बात से टल जाते हैं और बहुत सारी जंगें ऐसे ही जीती जाती हैं वाणी से। और दूसरी बात यह है, हम हिस्ट्री की किताबों में, ज्योग्राफी की किताबों में इन देशों के बारे में पढ़ते थे, थोड़ा बहुत जानते थे, पर G20 के माध्यम से जो एक डीप रिसर्च नॉट ओनली एट द एम्बेसडर लेवल, एट द स्टूडेंट लेवल जो रिसर्च हुई है, उसमें ऐसे तथ्य सामने आए हैं, हम हैरान हो गए हैं कि इस देश के बारे में तो हमें ये बात पता ही नहीं थी। और अभी थोड़े दिन पहले आईपी कॉलेज में प्रोग्राम था, तो एक नया तथ्य सामने आया, जो साउथ कोरिया कंट्री जिसका हम इंडिया से दूर का नाता भी नहीं मानते, तो वहां आज से 2500 साल पहले भारत की एक रानी वहां गई थी और वहां के किंग से उसकी शादी हुई थी। यानी साउथ कोरिया से हमारा कोई ऐसा संबंध हो सकता है, अगर ये G20 ना होता तो हमें पता ही ना होता, और अयोध्या में उसका स्मारक बनने जा रहा है। ये सारी बातों के लिए डॉक्टर सर आपका, प्रोफेसर योगेश सिंह का, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो इसको हम जन भागीदारी के माध्यम से कॉलेज लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे और स्टूडेंट लेवल पे ले आए। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। मैं जब ये सामने आई बात भी ऑस्ट्रेलिया पे बात करनी है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की बात करनी है, सबसे पहले मेरे पास ना प्राइम मिनिस्टर का जो एक भाषण है वो सामने आया।
वो भाषण क्या था, वो शुरू कहा होता है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मंच पे लेके जा रहे हैं और साथ में कहते हैं मोदी इज द बॉस। शायद आपने वो सुना। और प्राइम मिनिस्टर कहां से शुरू करते हैं, वो हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है ऑस्ट्रेलिया की और भारत के संबंधों की, यहां से शुरू करते हैं कि पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन थे उनको 3C से डिफाइन किया जाता था। वो 3C कौन सी थी? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट एंड करी। कॉमनवेल्थ, क्रिकेट एंड करी। और फिर समय बीता, 3D से डिफाइन किया जाने लगा। वो डी थी डेमोक्रेसी, डायस्पोरा एंड दोस्ती। और फिर एक नया दौर आया, अब इसको 3E से डिफाइन किया जाने लगा, एनर्जी, इकोनॉमी एंड एजुकेशन। और जो इसका जो भविष्य है वो है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट एंड जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ये भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में ही नहीं, जितने भी विश्व के कंट्री हैं और उनका ये एक आधारभूत ढांचा कह लो, ये उसका बेस कह लो। अगर आप दूसरे देश के प्रति, उस देश के लोगों के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाओगे, म्यूचुअल ट्रस्ट दिखाओगे, तो आपके संबंध बेहतर होंगे। और अभी तक जो हमारी यात्रा रही है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड रही है। हम प्रोडक्ट की बात करते हैं सर, कि फलाने कंट्री की चिप बनती है, फलाने कंट्री की ये कंपनी इंडिया में है। पर इस G20 ने जो यात्रा हमें करवाई है वो प्रोडक्ट टू पीपल कराई है। अब लोगों का लोगों से कनेक्शन होने लगा है, चाहे वो टूरिज्म के जरिए हो, चाहे वो एजुकेशन के जरिए हो। ये लोगों का जो आपसी संबंध है, यही वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको जमीनी सतह पर ये लागू कर सकता है। और भारत ने इस G20 से जो विश्व को दिशा दी है वो क्राइसिस टू कल्चर की है। विश्व कब काम करता है? जब कोई क्राइसिस पैदा होता है। भारत पहले कल्चर डेवलप करता है। क्यों डेवलप करता है? ताकि क्राइसिस पैदा ही ना हो। और इन प्रोग्राम के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी एक संस्कृति को विकसित करने का काम किया है। और उसके लिए मैं एक बार फिर अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर को और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन को, आपके प्रिंसिपल को, इन सभी को बधाई देता हूं। और आपने वेकेशन के होते हुए भी ये प्रोग्राम किया, इसके लिए आपको विशेष तौर पर बधाई। और आखिर में सिर्फ एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। मुश्किलें आपको भी आए होंगी। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, तो कीमत और बढ़ती है। Thank you, Ravinder sir, for your enjoyable, invigorating words. Our next guest of honor for the evening, Shri Anup Latharji, is a true beacon of cultural vivacity. Besides presently being the chairperson of the Culture Council of the University of Delhi, he has earlier been the Director of Youth and Cultural Affairs in Kurukshetra University. Sir has also been the Consultant of Youth and Cultural Affairs at the Delhi Technical University. Sri Lathar has also been nominated by India Today amongst the top 20 national personalities for his worthy contribution towards the remarkable work done by him in the state of Haryana for the promotion, preservation and documentation of Haryana's folk art, culture and music. It is a pleasure having you with us, sir. I will request you to say a few words. Thank you. Thank you, dear. Good evening, everybody. Very good evening. Hello. Hi. Good evening. Good evening. Thank you. So nice. You responded to me. मधुर वाणी वाले कपाही साहब,
आज के हमारे मुख्य अतिथि और रविंदर जी के बीच में मैं सैंडविच हुआ हूँ, दो अच्छे से वक्ताओं के बीच में। अनेजा साहब, चंद्रमोहन जी, खट्टर साहब, मेरे कुलीग्स राजेश सिंह जी, राजेश कुमार जी और मेरे जॉइंट डीन साथ में हमारे आए हुए हैं, प्रोफेसर मनीषा, प्रोफेसर हेमंत एंड प्रोफेसर दीप्ति, गुरप्रीत जी, ऑल मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, सभी दोस्तों, नौजवानों, साथियों। ये G20 का जो आयोजन वसुधैव कुटुंबकम के इस स्लोगन के साथ किया गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कल्चरल काउंसिल द्वारा और किरोड़ी मल कॉलेज ने आज उसका आयोजन मिस्टर खट्टर के नेतृत्व में किरोड़ी मल कॉलेज में किया है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और कल्चरल काउंसिल दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस जो हैं बड़े पुराने संबंध हैं, आज के नहीं। वो कुंभ के मेले में खोए जाते हैं और पाए जाते हैं ना, कुछ उसी तरीके से संबंध है। जब यूरोप वालों को कुछ समझ आई और वो जागे, पुनर्जागरण उनका हुआ और उन्होंने आंखें खोली तो संसार में भटकते हुए निकले, खोजते हुए निकले, तो उनको हम भी पा गए, उनको अमेरिका भी मिल गया, उनको ऑस्ट्रेलिया भी मिल गया, उनको सारा विश्व मिल गया। हम वहीं के वहीं थे पर हम उनको मिल गए। लेकिन उससे 7,000 वर्ष अगर पहले जाए या उससे भी पहले 60,000 वर्ष जाए, when this glacialization of the world took place, तो सारे समुद्र पहले 50 मीटर, फिर 150 मीटर नीचे की ओर चलते चले गए। जो अच्छे अच्छे ग्रीनरीज थी वो सब सूखे रेगिस्तान बनने लगे और जो कोस्ट थे वो आगे बढ़ने लगे। लोगों ने वहां पर कहीं द्वारका बनाया, कहीं नोएज आर्क बना, कहीं कुछ और विश्व में बना और संसार चल रहा था कि पानी फिर से ग्लेशियर्स पिघलने लगे, फिर से पानी भरने लगा। और पानी भरने से पहले वो जावा, सुमात्रा, वो सिलोन, वो इंडोनेशिया, वो सब जो एक जुड़े हुए प्रदेश थे और जहां जब पर्शिया से जेनेटिक मूवमेंट्स शुरू होने लगी, एक मूवमेंट का एरिया जहां यूरोप गया तो दूसरा मूवमेंट का, जेनेटिक मूवमेंट का जो एशिया की तरफ आया और साउथ एशिया की तरफ गया, उसी में से कुछ पोर्शन ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंचा। कुछ नेविगेटर्स, कुछ ट्रेवलर्स, सेलर्स वो भी वहां पर पहुंचे और वो वहां के ऑब्रागनल्स थे। और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने या यूरोप ने या डच ने हमें खोजकर फिर अपने जहाजों में अपने क्रिमिनल्स के साथ बिठाकर और हमारे सैनिकों को और लेबरर्स और डिवेंचर्ड वर्कर्स को बिठाकर वो भी हमें ऑस्ट्रेलिया में भेजा। हमारा संबंध ऑस्ट्रेलिया से तब से है। आज मिस्टर सहगल जैसे ऐसे बिलियनर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में 80,000 बिलियन के मालिक हैं। आज 7 लाख के करीब हमारा हिंदुस्तानी वहां पर इंडियन बॉर्न ऑस्ट्रेलिया में है और वो वहां एजुकेशन में भी उनसे बेहतर है परसेंटेज में,
वो हर क्षेत्र में फाइनेंशियली उनसे बेटर है, उनके नेशनल एवरेज में उनसे बेटर है। और आज जहां विश्व में ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वहां चलता है जहां अमेरिका चलता है, और आज अमेरिका हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी उसी तरीके से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो। आज हमारे इतने सारे नौजवान वहां स्टडीज के लिए जाते हैं, स्टडीज के लिए जाते हैं और फिर सेटलमेंट के लिए जाते हैं, फिर वहां से पीआर लेते हैं। इसी तरीके से जहां पूरे यूरोप ने पहले पूरे विश्व को भर दिया था, आज शायद हिंदुस्तान, वो और बात है कि वो विश्व को वो अनपढ़ लोग भर रहे थे, हमारे आज के वसुधैव कुटुंबकम में हम सारे विश्व को पढ़े लिखे और स्किल लोग वर्ल्ड को भर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे विश्व को अपने देश की तरह शांतमय और कीर्तिमान बनाए। वहां पर हमारे संबंध अच्छे रहे, लेकिन G20 क्यों मनाया जाए, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निश्चय लिया कि देश को आगे प्रगति करानी ही है, देश को एक स्थान पर पहुंचाना है, और धीरे धीरे हमें G20 एक इनाम के तौर पर मिला। और जब इनाम मिलता है ना दोस्तों, तो उस इनाम के पीछे कितनी कुछ मेहनत छुपी होती है, वो हमें समय समय पर लोगों को याद कराना बहुत जरूरी होता है कि इस पद तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या, देश को क्या कुछ करना पड़ा है और क्या कुछ हमने किया है, ताकि आने वाले समय में भी हम अपनी गलतियां और अपनी अच्छाइयां दोनों को याद करते हुए हम आगे विश्व में आगे बढ़े। आज चाहे क्वाड हो या किसी भी तरीके का कोई संस्था हो, हम और ऑस्ट्रेलिया, हम एक ही पार्टी के तौर पर आपस में मिलकर खड़े, मिलकर काम कर रहे हैं। चाहे हमारा इंडियन ओशन को लेकर हो, चाहे पैसिफिक ओशन को हो, वर्ल्ड के हर पैमाने में ऑस्ट्रेलिया और हम आज एक ही उस पर खड़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया और हम ऐसे ही कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे। G20 का हमारा स्लोगन वसुधैव कुटुंबकम ऐसे ही संसार को अच्छे रास्ते पर लेता चले। आपने इसका आयोजन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत मुबारक। Thank you, Anuj sir, for your very insightful words. Our chief guest for the evening, Professor Aikyam Kapahi, needs no introduction. May I please request Kapahi sir to come to the podium and grace the occasion by saying a few words. Very respected guys and equally respected people who are sitting on this side. But I can see only in front, and there are people sitting beyond that also. And but I would say that I think one of the first functions related to G20 was held in this college. I think it was in May or something. I don't remember exactly the date. But then, since this was not a holiday working, this lawns were full. These lawns were full. But today, despite the vacation, despite the university being closed, we are having such a good function. Since I belong to this college, I can afford to be slightly informal. I would say that I have been given the status of chief guest, but I am an accidental chief guest. Meaning thereby that the genuine chief guest was Dr. Balram Pani. So he couldn't come. Since I happened to be here, since it is my own college, so I was elevated to the status of being chief guest. But all the time when we were sitting here, I was absolutely scared that Pani may not turn over. And then I might have to be downgraded in my status. But luckily,
He's a nice man. He didn't turn up. You see, even otherwise also, you see, in the architecture of seminars and functions, in this architecture, there has to be a chief guest, there have to be special guests, etc. So, therefore, I am the chief guest. But nevertheless, another difficulty of being the chief guest is that he is the last to speak. So, everything which is intelligent, everything which is worth saying has already been said. तो हमारे लिए कुछ ऐसा बचता नहीं है, फिर भी कहने की कुछ जरूरत पड़ती है. तो मैं तो देखिए सारी उम्र अपना ड्यूटी एक्टिविस्ट रहा हूँ, all across, right from wherever I have been, whether UGC or wherever I have been a duty activist. Duty activist means not only Jindabad, Murdabad, but I mean in the sense that certain good things should come out. I mean, struggle when struggle is required, but also negotiation, settlement when settlements are required, the combination of the two. Now, it is in this respect, before I come to G20, I would say that though it is happening almost 12 years after my retirement, but the period beginning from last about 17-18 months had been the best period for Delhi University and its affiliated colleges. One of the greatest contributions, it began with Joshi but it got concentrated when Yogesh Singh came as the Vice Chancellor. The happiness quotient of this university increased many times. I need not go into the details, but the happiness quotient went many times over. Today, the university is a happy place to be in. We have also faced a system for about many years when the university was a stagnant place, a static place, where people were dissatisfied. And this is the occasion for the last, when so many things have happened. I mean, just imagine a situation where for 10 years there had been no promotions. No promotion, there was extreme stagnation. Get into a situation where the ad hocism became institutionalized. There was no need for that. But all this has changed. All this has changed during the last about 18 to 20 months. Now just imagine a situation where in a short span of time, more than 10,000 promotion units have taken place. Unit means if somebody, maybe 5,000 to 6,000 people might have been promoted, but units mean that somebody has come from grade 11 to 12 to this thing to professor level. So this is more than 10,000. 10,000 was only last count. It must be about 11,000 now. And imagine a situation where you never one could think where the professors in college and senior professors in this. So that's why I am saying I think that I can keep on and on. And the people, जैसे अभी permanent हुए हैं. अभी किसी ने कहा हमारे वो इस समय सज्जन है नहीं कहा प्रवीण अंशुमन उसके नीचे लिखा मुझे बड़ा अच्छा लगा. उसने कहा कि permanent is permanent. Permanent is permanent. You know, permanent, imagine, I mean, those people who spend 10 years, 15 years as ad hoc teachers, but they get permanent. What is the kind of status? What is the kind of situation? What is the kind of mental atmosphere that changes in there? It's a new this thing. So, the Vice Chancellor and his team has brought happiness to this university, and I want it to be conveyed. I want it to be conveyed because, you see, as a duty activist, I have always been fighting with the authorities, but this time I am praising the authorities because good things has come. And I think the situation will become better and better. Similarly, in this G20, you see, when G20, I mean, that G20 exists, we knew it only as some kind of a मालूम था कि भी अखबारों में आता है कि G20 की मीटिंग इंडोनेशिया में हुई या बाली में इधर हुई उधर हुई ऐसा करता था. But G20 didn't click with us. It was only some kind of an annual event. But this time, G20 has become a part of our psyche. Part of our psyche. हमें लगता है कि भाई कोई इवेंट है जिसके अंदर भारतवर्ष ने पार्टिसिपेट किया है. और इसके अंदर अगर देखें अभी पिछले एक साल के अंदर 8-10 जगह दिल्ली इंडिया के बाहर इंडिया में जाने का हुआ.
Everywhere there had been a festive kind of atmosphere. It was an enthusiasm, cleanliness, infrastructure. और सबसे बड़ी बात बनी है कि G20 में हमने दूसरे लोगों के बारे में जाना, दूसरे कंट्रीज के बारे में। अब उसके बारे में डिटेल में नहीं जाता क्योंकि सभी बातें बताएगी। जितनी कंट्रीज है उनकी डिटेल, उनकी हिस्ट्री, उनके भारत के साथ क्या ताल्लुक रहा, इत्यादि इत्यादि इन्होंने जाना। पर मैं इससे कहता हूं कि इससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि जो वर्ल्ड है, उन्होंने जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उन्होंने भारत के बारे में जाना। जो वो भारत के बारे में जाना वो क्या है कि जैसे पहली बारी पता, देखिए मैं थोड़ा सा मतलब पॉलिटिकल नहीं कह रहा, क्रिटिसिज्म में नहीं कह रहा, पर मुझे याद है कि हमारी एडोलेसेंस के अंदर एक फोटो मेरे दिमाग में छाई हुई है। वो दिमाग के अंदर ये छाई हुई है कि नेहरू जी बैठे हैं, साथ में मिसेस कैनेडी बैठी हैं, साथ में उनकी एक और कोई रिश्तेदारी में थी, मुझे मालूम नहीं कौन थे, और वहां पर एक सपेरा है। आपको भी कईयों को याद होगी कि वो सपेरा है, वो बीन बजा रहा है, और जो मिसेस कैनेडी वो डर जाती हैं इत्यादि, और उसका बड़ी चर्चा रहा। तो कभी अगला तो देखोगा कि कभी ये मशहूर भी बड़ा होता था कि भारत जो है सपेरों का देश है, मतलब कि कई चीजें डेवलपमेंट हुई कि भारत सपेरों का देश है। अब उस सपेरों के देश से ये लोगों को जाना, लोगों ने जाना कि भाई भारत सपेरों का देश नहीं है सिर्फ, भारत में अब जैसे कोइंसिडेंस है कि चंद्रयान, जो मून मिशन हुआ, सन मिशन हुआ, लूनर मिशन, सन मिशन, ये सारे के सारे अभी आए। ट्रांजैक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांजैक्शन, जैसे भी कहा कि 40% ऑफ टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस इन द वर्ल्ड दे हैपन इन इंडिया। ट्रिमेंडस थिंग। कभी आप देखे हैं कि कैसे कैसे, मतलब ये भी देखा गया कि जैसे शादियां होती हैं, शादी होती है, तो जो ढोल बजाते हैं, तो ढोल बजाने वाले ने भी आगे वो लगा के रखा हुआ है पेटीएम वाला, तो अपना ढोल आगे लाके लेता है, वो उसके आगे पेटीएम करते हैं, और जो शगुन है वो मतलब दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। सो व्हाट आई एम सेइंग वाज दैट इंडिया वाज शोकिंग। जो लोग कहते हैं कि भाई ये इवेंट मैनेजमेंट है, इट्स नॉट एन इवेंट मैनेजमेंट, इट ब्रॉट प्रेस्टीज टू इंडिया इन द एंटायर वर्ल्ड। Now people know us as an achiever, as an upwardly mobile, as a country which is going northwards. So people know us. तो मैं बहुत लंबा ना बोलते हुए, देखिए वैसे होता है कि जब 12 साल रिटायर हो गए तो आगे माइक पड़ा हो तो 50 मिनट की बोलने का, but I don't want to test your patience for a longer time, but I will say only one thing. You see, the world is knowing us beautifully, but here we should also know ourselves. हम दूसरे को तो जानते हैं, अपने बारे के अंदर तो जानना है कि हमारी भारत की हिस्ट्री क्या रही, सिविलाइजेशन हिस्ट्री क्या रही, क्या ट्रेडिशंस रही, क्या क्या अचीवमेंट्स रही, क्या ग्लोरीफाइड अचीवमेंट्स रही, मतलब वो जानना भी बहुत जरूरी है। और ये भी जानना जरूरी है कि क्या कमियां रही, क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्लोरीफाई मतलब पॉजिटिव चीजें के बारे में जानोगे, नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं जानोगे, तो फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगी। इसलिए एक बैलेंस, वन शुड नो अवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अवर वीक पॉइंट्स। कि हमारी भारतवर्ष की जब हजारों साल पहले, जब सैकड़ों स्टेट्स होती थी, हजारों बोलियां और डायलेक्ट होती थी, तो भी अगर कोई व्यक्ति चलता था, जो कन्याकुमारी से चला और पूरा कश्मीर ऊपर तक चले गए, इधर से ईस्ट टू वेस्ट गए 3000 किलोमीटर, इस तरफ 3000 किलोमीटर, तो बोलियां अलग, पहनावे अलग, खान पीन अलग, शक्ल सूरत अलग, बट इवन देन देयर वाज सम काइंड ऑफ यूनिटी, देयर वाज सम काइंड ऑफ फीलिंग दैट वी आर वन कंट्री, वन सिविलाइजेशन। तो वो सिविलाइजेशन क्या है, व्हाट इज सिविलाइजेशन वैल्यू, वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि G20 का भारत को जाना, क्योंकि मेरी ये मानना रहता है हमेशा कि जो कम्युनिटीज, अब इन द कम्युनिटीज और द नेशंस which can delve deep into their past can also see far into their future. जो कम्युनिटीज अपने मतलब भूत के अंदर बहुत दूर तक झांक सकती हैं, तो अपने भविष्य को भी बड़ी दूर तक नियंत्रित कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि G20 का एक ये मैसेज मिलता है
we are a strong country. We are an upwardly mobile country. We have to balance our activity with the rest of the world, and we must unite, and we must fight as a nation and progress. Thank you very much, and we have a wonderful program ahead. Thank you. Thank you, Kapil sir, for your inspiring words. We will now move on to our cultural events for the evening. I will request our honorable guests to please take their respective seats downstage for the commencement of the cultural events. I will also request my dear colleague, Dr. Shalini Bakshi, to take over the charge for the conduct of the cultural events. Thank you. Thanks, Sukanya. We now begin the cultural section of the program, which marks the celebration of the harmonious coming together of India and Australia. The cultural evening attempts at acknowledging our diverse traditions and fostering friendship between the two nations. Today's program is structured as an alternating set of music and dance pieces presented by Kirori Mal College Music Society Music and its Dance Society Sensation. नहीं नहीं ना 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 प्रोफेसर प्रोफेसर अरे हाँ तुमको करा सकते डिपार्टमेंट से करा लेना किसी के नाम से रेखा मैम को बोल कॉल करेंगे वहाँ पे भाई वहाँ पे फोन मेल करना होता है फोन करना होता है हो जाएगा आपको ऐसा कोई राजू सर से करवाएंगे तो भैया फिर मैं थोड़ी ना होगा ये प्रोफेसर से होता है वो कॉलेज के डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल से और वो फिर ऊपर का अगर तो उनसे वेणु सर को बोलो ऊपर आता है We now begin with Garaj Garaj, Hindustani classical composition based on Rag Miyaki Malhar. Based on Kafi Khat, it has all 7 notes in Aram but uses only 6 notes in Avrum. The beauty of the rag comes from the usage of both Komal and Shuddh Nishad,
as well as Komal Gandhar. Newsrock presents Garaj Garaj. बस रहने दो, इतना ही है। ठीक है, वो लाइट बढ़ाएंगे। नमस्कार, हम न्यूज़ॉक किरोरी माल महाविद्यालय की संगीत संस्था आज आप सभी के समक्ष एक रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि राग मियां मल्हार पर आधारित है। आशा करते हैं आप सभी को ये रचना पसंद आएगी। आगे दीजिए। This week only, and I have asked on the WhatsApp group also. So and one of the member from ICC sir has called me for this, and he has given me that all link and all. And so for tomorrow I will ask from the college whether the college have got the money or not. Progress is good. Like I have already hired the RA, and we together we are working. Hello. And then when we talk, actually I mean right now in college and G20 actually हो गया। हाँ देखा था मैंने तो एक बैंड भी देखा था मैंने तो उसी का पार्ट
छोटा सा ब्लॉक है बस बस अब तबला वादक भी दिख रहा है धन्यवाद। That was Gurujat. Now we move on to a classical dance piece, Artha Narishwara, where Lord Shiva and Goddess Parvati engage in a spirited debate to determine who is supreme. In the clash of masculine and feminine energies, resolution is found in the beauty that harmony brings.
This space is created by the choreo wing of the Dance Society. कैलाश की एक समय की बात है, कैलाश की ऊंची श्रृंखलाओं के बीच स्थित शिव पार्वती एक दिन एक गहरे विवाद में पड़ जाते हैं। बात कुछ यूं उठ जाती है कि आसपास उपस्थित देवी देवताएं गहरे संकट में पड़ जाते हैं। कौन बड़ा, शिव या शक्ति? इस प्रश्न का उत्तर न दे सका कोई, न माता पार्वती झुकने को तैयार और न शिव शंभू। इसी बीच इस विवाद को और रोमांचक बनाने के लिए नारद मुनि अपना खेल दिखाते हैं। नृत्य स्पर्धा के माध्यम से दोनों को अपनी अपनी शक्ति दिखाने का प्रस्ताव रखते हैं और इसी तरह शुरू होता है महायुद्ध। यहाँ लाइट कम है ना, और वो वहाँ से ऊपर बाकी अपनी सेटिंग है।
first sensation, music now brings a set of light Indian pieces and we present two Bollywood songs, Ae Watan and Ye Hausla. पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, ब्राउन ब्राउन दिख नहीं रहा। लाइट पता नहीं इतना क्या लाइट, ये ग्रेश ग्रेश तरह ज़्यादा हो रखा है पॉल्यूशन की। अच्छा वो लेकिन कोई नहीं, वो लाइट में तो बाद में ठीक करेंगे उसको। लाइट में दिक्कत आ रही है, ऐसे तो फोटो बढ़िया आ रही है। हाँ ये तो लाइट में दिक्कत आ रही है। वीडियो में तो ज़्यादा सेटिंग्स नहीं होती थी करने के लिए। ठीक है प्ले। लाइट अब बढ़ेगी नहीं से क्योंकि लाइट ट्रैवल भी करती है ना, बीच में जब लाइट ही नहीं है तो कितना कितना जो है मैनुअली वो कवर करेगा। इनके सिस्टम में लाइव करने के लिए ना ये कैमरा नहीं होता, इसका बैकअप 1-1.5 घंटे है, 2 ही उसमें बचा हुआ है बैटरी, दोनों कवर हो पाएगा कि नहीं पड़ाई। ये ऑडियो है, ऑडियो का। हाँ हाँ वही है। एक घंटा 32 मिनट 49 सेकंड हो चुका है। रिकॉर्डिंग रोक दो ना, रोकना एक बार रिकॉर्डिंग। आपको मेरा नेट सेम है।
कब मिलोगे तो पार्टी में तो देना आबाद रहे तू, आ जाना आबाद रहे तू। कॉलेज में G20 चल रहा कॉलेज में जाऊंगा सुना मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, आबाद रहे, मेरे वतन, आबाद मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। क्या कैसे झुके ये आरज़ू, कैसे रुके ये हौसला, कैसे झुके ये आरज़ू, कैसे रुके। मंजिल मुश्किल ना था, गुमरा साहिल तो था, तन्हाई दिल तो था। हिम्मत रंगाएगी सुबह
Moving on, we bring a mashup from the western wing of the Dance Society of Kirori Mal College. Begging, begging you, put your loving hands out, baby. I'm begging, begging you, put your loving hands out, baby. Now we come to the Indian retro mashup, celebrating the vintage songs of yesteryear.
लास्ट दो स्क्रीन वो रख देता हम वो उधर से ही रुक देता है लास्ट ही होगा हेलो लास्ट ही निखिल Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. चलो सब जा रहे हैं धीरे धीरे कब देंगे सर अब जा Hello, check. आओ इधर आओ इधर आओ निखिल फोन ले Hello, जल्दी आओ Hello. दे दो बाइक्स कुछ अभी भरा नहीं अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल भी भरा नहीं अभी तो आई हो चश्मा
पुराने तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो तुमने मुझको हंसना सिखाया तुमने मुझको हंसना सिखाया रोने को रोगे अब रोने को रोगे तुमसे मुलाकात हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझे इस दिल को बसा देता ये देख के झूमा हुआ सावन की घटा
We now have the annual thematic dance production of sensation choreography wing, Matsarya, a tale of jealousy, envy and revenge. अरे वर्णिका वो मेरी दोस्त को देखना है वो देखना है
सिर्फ एक नाम, एक नाम ही तो चाहा था। मेहनत, दिल, जिंदगी, इन सब से एक नाम, और वही नाम जिसे कल दुनिया जाने। ये कहानी है उसी एक नाम की दो दीवारों की। प्रेजेंटिंग दिस ईयर्स प्रोडक्शन मात्सर्य। कला में डूबकर खुद को भूलकर नाम की ये जो तलाश है। कहते हैं दोनों दीवार पीछे हटने से ऐतराज है। एक रोज एक दीवाने को मन में हुई इच्छा, रच डाला उसने ऐसा चक्रव्यूह कि पल भर को नाम उसने अपना बना लिया।
अभी वो लगाए रिफ्रेशमेंट लगाई वहाँ भी एक एनसीसी वाले ग्रुप की बाइक है ना, ये जो परफॉर्मेंस दी इन बच्चों ने इन दोनों की Now we move to Indian light pieces. The first one Mission from the film Kesari and Lehradu from film 83. यार बैठ जाओ, हाथ वाथ कांप रहा है, अब क्षमता नहीं। क्या सिचुएशन बहुत अच्छा था भाई साहब, हाँ बहुत अच्छा। 2 मिनट के बाद में ध्यान आया, एक तरीके से किया स्पीकर पे अच्छा भी लग रहा था, बड़े स्पीकर पे। वॉइस ओवर आर्टिस्ट जल्दी बन जाओ। अरे तुम सर्च करना, तुम अभी भी एक है, मैंने सेव किया हुआ, मैं लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ पे लाइन खुद नहीं खरीद अपना वॉइस ऐसे है तो कई सारे, पर बात है स्टूडियो वाला क्वालिटी, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक Hello check. Hello check.
इंग्लिश सॉन्ग में किया ना, इंग्लिश सॉन्ग तो नहीं किया ना, इंग्लिश अभी है क्या इंग्लिश बैटरी अब बचा नहीं है। सारा प्रोडक्शन आज ही दिखा डालेंगे। कितने मिनट का बचा? 6:30 6:30 साल के ऊपर। फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर कौन सा कोर्स? पिछले सेमेस्टर तब जाके कहीं सर पे ये केसरी रंग सजाया ना पड़े कभी रंग तेरा इस मुंह से निकल के खून कहे मिट्टी में मिल जाऊं बन के मैं गिर जाऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जाऊं तेरी खेतों में लहराऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू कर मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा मैं गिर जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी खेतों में लहराना इतनी सी है दिल की आरज़ू। दूसरा क्या नाम था? मोहित नाम है आखिर क्या? फरार। आज उसे कमेटी से निकाल देंगे अगर एक्टिव नहीं रहा। पता नहीं कहाँ है। क्या बच्चा अपना आज का दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जादू रे साथियों दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी
हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, जातियों को दिखाता जोरबाजी होता है, जातियों को दिखाता जोरबाजी होता है, हिम्मत मरेदा मेरा संकुरानी होता है, क्या जमाने को दिखा दे खुद में दम क्या होता, लहरा दो सरकशी का पैचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का पैचम लहरा दो, लहरा दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। Now we move to the Bible section of our cultural evening, which has two performances. First up is the Western Dance Society piece that promises to showcase the rhythm, grace and energy of Western dance. ब्रो भाई आ गया फिर से। ये प्रोडक्शन आज ही लाके छोड़ती है जैसे कि तो ये प्रोडक्शन है क्या ओह ये तो वही वाला है। आइकम मैम कहाँ है? मैं कॉल करूँ क्या? खाना तो मैं इसी से पे। हेलो मैम, आप कहाँ पे हैं? मैम शायद मेरा ऑफिस में ईयरफोन छूट गया है, अगर आप चाहें तो बता दीजिएगा। अरे टीचर को खाना शुरू भी कर दिया।
क्या नहीं है आसन हो For the final performance, we have Musoc students building a Western set as a tribute to the Australian vocalist. The set comprises of All Out of Love by ASSI, Torn by Natalie Imbruglia, Chandelier by Sia, and Staying Alive by Bee Gees. Staying Alive remained a chartbuster not only in Australia, but all over the world. Over to Musoc for the last performance. निखिल, ये अगर बंद हो जाए ना तो वीडियो बना लेना मोबाइल से लास्ट वाले इनका खत्म ही हो गया। हाँ तो ये कभी नहीं बंद, अच्छा कभी बंद हो जाए। हाँ परफॉर्मेंस हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसका इतना ज़्यादा हाँ बहुत ज़्यादा काला 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 लाइट ही कहाँ है? जो बीच का जो लाइट ट्रेवल करेगा ना उसको लाइट तो चाहिए। फुल वाला जो डांस की थी उसको उससे कुछ नहीं सकता आई से या फिर सजेस्ट बनाया था वो भी बंद हो जाएगा। मैं नहीं बना मैं देख ही नहीं पाया, इंटरव्यू लेना था। इस यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे है लाइव तो इंटरव्यू लेना था टीचर्स का। एमसी पे चल रहा है ना, एमसी हाँ जैसा खुश रहेंगे ना जैसन आज खुश रंग के रंग का इसके लोग। अच्छा हाँ बेस्ट परफॉर्मेंस छूट जाएगी।
एडिटिंग कब कब करके कब तक एमसी के उस पर अपलोड करोगे? एक पता लग जाता है। सारे क्लिप्स तो यूज नहीं करोगे, मेरा क्लिप यूजेबल है। क्या? अच्छा check. क्या वीडियो नहीं नो कैमरा I want you to come back and carry me home, away from these lonely nights. I'm reaching for you, are you feeling it too? Does the feeling seem so right? And what will you say if I come now and say that I can't hold on? There's no easy way, it gets harder each day. Please love me and I'll be down. I'll be gone. I'm all out of love. I'm so lost without you. I can't be too late to say I was so wrong. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. What are you thinking of? 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 I'm all out of love. I'm so lost without you. I knew you were wrong. We're leaving for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say I was so wrong. I'm all out of love. What am I without you? I know you were right. We're leaving for so long. I'm all out of love. What am I without you? I'm too late to say that I was so wrong.
हो गया